Okay, now let's turn our attention towards an analysis of merge sort. And the good place to start is the merge function, which we have already discussed how it's an O of n function. But अब एक दफा कोड को देखकर लाइन बाय लाइन तो वो भी कंफर्म कर लेते हैं. तो obviously ये जो पहली चार लाइनें हैं, you should all know that all of these together, they're going to give us O of 1 time, right? All of these are constant time functions, so we don't need to bother too much about these. So all of these together are O of 1. Then these two calls to copy, they are simply bringing the data from a section of array A and putting them into L and R arrays. Linear time में ये काम हो जाना चाहिए. So together, जब मैं दो calls के बाद लिख रहा हूँ, तो उसका मतलब है together they are like O of n. Okay, and where n is basically right minus left plus 1. The total size of that section of A जिसमें merging हो रही है. Okay, so here this loop, this is the main loop. Again, it just goes through L and R. So total number of steps that this loop can take is O of n. And each iteration, on each iteration, it's doing constant time work. If statement, plus, plus, etc. So this whole thing is again O of n. And obviously, these last two loops, where you're copying the remaining data from one of the subarrays L and R back into A, this is also O of n. Okay, whatever is left cannot be more than n. So this is O of n, and this last thing, obviously this delete operation, that's O of 1. So putting all these O of 1 and O of n together, you get the merge function, which is O of n. So if I go back to merge sort now, I can say that this merge sort, this call to merge, okay, this call to merge, this particular call is the form I call के ऊपर लिख रहा हूँ, that's O of n. Merge happens in O of n. Where again, remember, I'm writing this in terms of n, but n is always it's taken as the size of input. Now, merge sort में parameters में से कोई भी parameter n नहीं है, but it is understood that n is basically this absolute difference. Okay, this thing. So this is equal to n. So based on that, merge is going to take an O of n time. How about these other lines? Now, this time we're going to do very specific kind of, very precise kind of analysis. So आप देखते रहे हैं कि जब भी loop based code हम लोगों ने किया data structure में, तो हम हमेशा t of n जो function है उसको लिखा करते थे कि t of n is equal to maybe n square, maybe n cube, maybe n plus n by 2 plus something, things like that. लेकिन in the case of recursive function, हम डायरेक्टली उस तरह से एक फॉर्मूला नहीं लिख सकते टी ऑफ एन का, एक डायरेक्ट क्लोज्ड फॉर्म फाइनल सॉल्यूशन नहीं लिख सकते, बल्कि इनफैक्ट टी ऑफ एन जो है रिकर्सिव फंक्शन के लिए, जो टी ऑफ एन है वो खुद भी रिकर्सिव होता है. मतलब हम इस रिकर्सिव फंक्शन कॉल को देखकर मर्ज सॉर्ट की ये बता सकते हैं कि टी ऑफ एन खुद एज अ रेकरेंस कैसे ग्रो करेगा. ओके, सो जब हम इस फंक्शन को देखते हैं तो इस इफ स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि ये तो O of n, O of 1 वर्ग है. Just computing this is O of 1. So I can write it in front of that line, O of 1. And this mid computation, this is also O of 1, right? Um, but these two recursive lines, now this is important. This is where we are going to write T of n as like a recurrence. ये दो recursive lines actually कह रही हैं कि हमने कुछ काम, half of the work actually, अगली call को भेज दिया. So this call is telling us that we need a T of n by 2 work from the next call, left call, and we need a T of n by 2 work from the right call. Okay, so I hope this makes sense. So just pause it and digest this if it's been if you don't get it just yet. तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक 100 साइज की array थी
तो एक तो उस 100 साइज के अरे पे आपको O ऑफ 100 यहाँ पर ये टाइम लगेगा मर्ज में। लेकिन फिर जब आपने 2 में स्प्लिट कर दिया है, ये O ऑफ 1 वर्क यूज़ करके जब दोनों में आपने स्प्लिट कर दिया है, वो जो स्प्लिट करके काम आगे होना है, वो भी इस T ऑफ n का पार्ट है, वो इस कॉल का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट कॉल्स से आ रहा है, लेकिन रिकर्सिवली नेक्स्ट कॉल्स का भी जो टाइम है, वो इस T of n का पार्ट है. So as a recurrence, and see, I'm using the word recurrence, okay, and this is the word we use for a mathematical specification of a recursive process, okay. So the recurrence for T of n for merge sort, okay, this is going to become the following. T of n for merge sort, in order to solve merge sort on an array of size n, we need to solve it on an array of size n by 2, and then we need to again solve it for an array of size n by 2. So this is like the left side, the right side, plus, this is important, plus the time taken on this call of size n. Okay, so बेसिकली जब मैंने आपको ट्री बना के दिखाया था लास्ट टाइम भी, जब हम फास्ट फॉरवर्ड का काम कर रहे थे, तो उसमें भी मैंने ये कहा था कि कुछ काम है जो अगली कॉल्स पे चला गया, ये वो काम है जो अगली कॉल्स पे चला गया, Tn/2, Tn/2, not just n/2. This is again Tn/2 because those are merge sort calls, and whatever time they take, that's again T of n/2, right? And this is the time जो कि इस कॉल पे लगा है। Okay, ये वो टाइम है जो कि आप कह सकते हैं कि कॉन्कर का टाइम है और डिवाइड करने का टाइम है। फॉर एग्जाम्पल मिड कंप्यूट किया तो वो O ऑफ 1 इसमें ऐड होना चाहिए। ये इफ स्टेटमेंट कंप्यूट हुई, वो O ऑफ 1 ऐड होना चाहिए, और ये मर्ज जो इस कॉल में हो रहा है वो O ऑफ n इसमें ऐड होना चाहिए। So O of 1 plus O of n is simply O of n, right? So I can write here maybe C times n. So in other words, these first two quantities, they are the same. So the recurrence that I get is 2 times Tn/2 plus Cn. That's the recurrence of merge sort. And when we write a recurrence, we also always, for the sake of correctness, we have to specify the base cases. So if you give me a 0 size array, then T of 0 is 1. And if you give me, or rather than 1, let's call it a constant C, because whatever that constant is. And if you give me a 1 size array, sorry, a 2 size array, okay, that's also, in fact, we not 2 size, 1 size array, that's this array which is our base case. जब हमारे पास 1 1 या 2 2 इस किस्म की arrays आती हैं, that's also a constant. So now this set of equations is now giving us our T of n. So usually I will just write it like this, right? This part, I can get rid of that part. So this is what it is. Now if you just look at this recurrence, and just looking at this recurrence, you can say we are talking about an algorithm which divides itself into two problems of equal size. And then to do the combined work, it takes O of n time. Okay. So I can look at a recurrence and I can say something about the algorithm which is producing that recurrence. Okay. That this particular algorithm divides a problem of size n into two problems of half size each and then combines their answers in O of n. Okay. More precisely, you can say it takes this O of n time within the call itself, and then it sends this much work forward. Now the question arises कि given this recurrence, हम किस तरह से पूरे के पूरे merge sort का time actually compute कर पाएंगे? क्योंकि सिर्फ recurrence जो है वो मुझे सिर्फ एक describe कर रही है. This is just describing. Let me write that down here. Describing how T of n grows. Okay, this is just a description कि इस तरह से आपका T of n बढ़ता है. Obviously ये मुझे ये recurrence है तो मुझे ये बता रही है कि T of n/2 further according to this recurrence, जब मेरे पास T of n/2 की calls आएंगी, okay, तो वो further to T of n/4 की calls में तब्दील हो जाएंगी, और वो total time जो वहां पर लग रहा होगा वो C
n/2 उस कॉल में लग रहा होगा, क्योंकि n/2 की कॉल थी, पिछली बार n की कॉल थी, n/2 की कॉल थी, तो इतना टाइम लग रहा होगा उस पर्टिकुलर स्टेप में। मतलब ये एक Tn/2 की कॉल है, लेकिन ये ओरिजिनल में इस तरह की 2 कॉल्स थी, 2 Tn/2 कॉल्स थी। मीनिंग ये है कि हमें सारे स्टेप्स अलग-अलग लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। एक्चुअली जब हमने इसको देखना होगा तो हम वही काम करेंगे कि हम ये रेकरेंस लेंगे, और चूँकि ये एक रिकर्सिव प्रोसेस है, मैथ में लिखा हुआ है बट एक रिकर्सिव प्रोसेस है। हम इसका एक रेकरेंस ट्री बनाएँगे, और उसी तरह जिस तरह लास्ट टाइम हमने टोटल वर्क कंप्यूट किया था, तो वही वर्क हम कंप्यूट करेंगे। So now let me make a particular a recurrent tree for this recurrence and use that to compute the total time taken by this algorithm. So here is the recurrence that I just wrote. T of n is 2Tn/2 plus Cn, and here are the base cases. Now, how do I draw a tree for a recurrence like this? So just like this. Obviously, आप देख सकते हैं कि ये recurrence आपको बता रही है कि हर problem की 2 child हैं. So this is going to become a binary tree. So size n problem divided into 2 size n/2 problems, which are divided into 4 size n/4 problems. Obviously, these are divided into 8 size n/8 problems, all the way to size 1 problems. Okay. Now, before I do anything else, because इस tree में actually हमने करना क्या है, you know that मैंने last time भी बात की थी जब हम fast power को not so fast power को actually जब हम analyze कर रहे थे, कि इस तरह के ट्री में जो वर्क हमें मिलता है, उसका अच्छा तरीका उसको कंप्यूट करने का ये है कि पहले हर लेवल का वर्क अलग-अलग से देख लें, यानी हॉरिजॉन्टली लेवल बाय लेवल वर्क को एक्यूमुलेट करें, और फिर वर्टिकली अक्रॉस द लेवल्स वर्क को एक्यूमुलेट कर लें। पहले हॉरिजॉन्टल देखते हैं। यहाँ पर इस लेवल पे एक कॉल हुई है मर्ज सॉर्ट की, जिसमें एरे का साइज n था। तो जस्ट इन दिस कॉल, okay, I only have to worry about this call at this level. इस कॉल में कितना टाइम लगा, Cn को टाइम लगा, हमारी रेफरेंस हमें ये बता रही है, C of n टाइम लगा। अब दूसरे लेवल पे आ जाएं। दूसरे लेवल में एक साइज n/2 की एरे थी, उसकी मर्जिंग हुई होगी इन n/2 स्टेप्स। ओके, सो वी हैव टू इंक्लूड दिस बाय 2। मर्जिंग मतलब एक्चुअली क्या हो रहा होगा, यू कैन इमेजिन, एक्चुअली यहाँ से जब रिजल्ट्स आएंगे n/4 और n/4 के रिजल्ट्स आएंगे, तो वो मर्ज होके एक n/2 की एरे के अंदर मर्ज होंगे। यहाँ ओवरऑल n/2 का टाइम इसमें लगना है। सिमिलरली ये जो इसकी सिबलिंग कॉल है फर्स्ट लेवल पे, ये जो n/2 है, इधर भी एक n/2 टाइम लगना है। C टाइम्स n/2 काम यहाँ पर, और C टाइम्स n/2 काम यहाँ पर। When you add them two together, you again get Cn. Okay. Let's look at the level number 2. So this was a level number 0, level number 1, level number 2. So at level number 2, once again, you have, but now this time you have 4 calls. This call is of size n/4. Okay. So this n/4 sized call, it's going to take C times n/4 in this call. Similarly, C times n/4 in this call, and C times n/4 here, and C times n/4 here. So 4 times Cn/4 is again just Cn. And now you can use your imagination. In the next level, there are going to be 8 calls of n/8 size each. Each of them takes Cn/8 time. So 8 into Cn/8, this is again here, you're going to get C of n. So this is a very nice and clean recurrence, meaning के हर लेवल पे मुझे एक ही जितना काम मिल रहा है। This may not be the case. Actually, जब हमने not so fast power का टोटल टाइम निकाला था, तो आपने देखा था कि ट्री के हर लेवल पे पहले n काम था, आई थिंक, फिर 2n था, फिर 4n था, और इस तरह काम चल रहा था। यहाँ पर हर बार एक ही काम है, Cn, 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 Cn. And I hope all of you can answer कि टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं। ओके, यहाँ पर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डाटा कितने फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है। हर लेवल पे डाटा हाफ हो रहा है, यानी कि कॉल्स जो हैं आपकी इंडिविजुअल कॉल्स, वो हाफ साइज की हैं। इसी तरह नेक्स्ट लेवल पे दे आर ऑफ 1/4 साइज, एंड देन उसके बाद दे आर ईच द साइज ऑफ ईच कॉल इज डिवाइडेड बाय 2 अगेन,
and you have to reach this base level where every call is just size 1. So how many divisions will take you from n to 1 if you're always dividing by 2? That by definition is log of n, right? So you have here log of n levels, okay? And this now means that so I have accumulated work horizontally. Now to accumulate the work vertically is going to be very simple because every horizontal term is same. So I just add all of these together, and we know there are log of n of these terms because this is the level. So जब आप c को common लेते हैं, तो you get n plus n plus n. Now इस case में तो you can easily just n into log n multiply कर दें, n log n time आ गया, and this is exactly the complexity that we wanted. Now, but let me just make a comment. What I'm getting here is a series, right? And you saw that in not so fast power, this series was not n plus n plus n plus n. This was like n and then 2n and then 3n, sorry, 4n and 8n and something like that. So you can have a series here which does not remain the same. That does not, I mean, a series in which every term is not the same. तो वो ये actually geometric series है, लेकिन इस case में geometric series की ratio 1 है. So terms same रहती हैं. But you can have a ratio more than 1, or you can have a ratio less than 1 also. But in general, when you do this vertical addition, you're going to get a geometric series. So you have to have that formula for the geometric series in your mind, which let me just mention, which was, well, actually just go and look it up. If you want to add geometric series of k terms, what is that formula? It is just a into r to the power k minus 1 over r minus 1, something like that, where r is the ratio. So read up on that. Now, so we have seen the analysis, and it just turns out that our entire algorithm is only O of n log n. Now, one last comment about it. जिस तरह से हमने ये add किए हैं running time, इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है और जिस तरह हमने वर्क को एक्चुअली अकाउंट किया है, काउंट किया टोटल वर्क, वो ऑर्डर्स डिफरेंट है. ऑब्वियसली जब एग्जीक्यूशन होती है तो इस n की कॉल के बाद आप इस n/2 वाली कॉल पे आ जाते हैं, फिर आप यहाँ आ जाते हैं. लेकिन ये ऑर्डर एग्जीक्यूशन का ऑर्डर यूजफुल नहीं है जब हम टोटल टाइम की बात करते हैं, क्योंकि इन विच एवर ऑर्डर these calls are taking place, all of them have to take place. So I don't have to count like इसका टाइम ऐड करो, फिर इसका टाइम ऐड करो, फिर इसका टाइम, ऐसा I don't have to go it like that, do it like that. It is more convenient to add level by level, कि पहले इस कॉल पे कितना टाइम ऐड कर लो, इन कॉल पे ऐड कर लो, इन कॉल्स पे ऐड कर लो. तो this is how you're going to add time level by level and then accumulate all the time vertically, and then you get and once you do that, accumulate all the thing vertically, you're always going to get a geometric series here, and if you can sum that series you will know the bound. Okay, now this was about merge sort, and we're done with this algorithm. This is the, you know, a very useful algorithm. Actually, in many programming languages, the algorithm that is implemented is merge sort, and this includes Python, for instance. So merge sort is actually asymptotically optimal algorithm. Actually, we'll see a proof which will show us that any sorting algorithm which compares numbers cannot be faster than n log n. Although practically some algorithms will beat merge sort. In particular, quicksort will beat merge sort, and you will do some practical, as part of your assignment, you will do some practical examples जहाँ पे आप actually programs run करके उनकी performance को compare करेंगे. So this was for merge sort, and now I'm going to probably in this lecture, or maybe part of the next one, I'm going to solve a few more recurrences. Like I'm going to solve these two recurrences just to make you more acquainted with this process of how we are, how do we accumulate this. And I'm going to solve one more recurrence, and I'm going to answer that question which was asked, that why is it that we always seem to be dividing things in two parts? Even in fast power, हमने दो टुकड़े कर दिए थे, तीन क्यों नहीं कर दिए? इसी तरह merge sort में हमने दो सब problems बना दी, तीन क्यों नहीं बना दी? In fact, let me leave this video with that question. And this actually, this what I'm going to do now will also tell you the importance of and the convenience of having recurrences. Imagine करें कि मैंने merge sort को दो की बजाय तीन टुकड़ों में
मैंने मर्ज सॉर्ट के दौरान एरेज को स्प्लिट किया, 2 की बजाय 3 टुकड़े। तो एक मैंने मिड भी निकाला, और एक्चुअली मिड नहीं निकाला, मैंने एक 33% पॉइंट निकाला, फिर उधर से आई थिंक 67% तकरीबन टाइम निकाला, और फिर बीच वाला जो है देख लीजिएगा, जो भी 3 टुकड़े बनते हैं। सो इस तरह से मुझे यानी 2 स्प्लिट पॉइंट निकाले और 3 चाइल्ड प्रॉब्लम्स बना ली और फिर उनको मर्ज किया। अगर हम ऐसे करेंगे, now without writing the code for all that, for that algorithm, I can still write the recurrence for that algorithm. That algorithm should have this kind of a recurrence. That merge sort with 3 sub problems should be like this. You want to solve a problem of size n, okay? So you, in order to do that, you solve 3 problems, okay, of size n by 3 each, okay? उस जो स्ट्रैटेजी में मुझे कुछ इस किस्म की रेफरेंस मिलनी चाहिए। प्लस अगर आपने 3 एरेज में से, अगर आपने, मैं आपसे कहूँ कि आप एक 3 वे मर्ज लिखिए, मर्ज में एल आर की बजाय एक एल आर और यू भी एक एरे है लेट्स से, तो उसको लिखिए। तो वो भी आप लिख सकते हैं, आई जे 2 पॉइंटर्स की बजाय अब आपके पास एक आई जे और एम हो जाएंगे, और वो तीनों में से जो सबसे छोटा होगा उसको आप ऊपर मूव करेंगे। तो ये भी आप O of n में कर सकते हैं। आई होप कि यू कैन इमेजिन, यू कैन राइट 3 वे मर्ज इन O of n। O of n कर लें या Cn कर लें। Okay, let me actually follow that convention and let me write here Cn. Okay, so this is going to be the recurrence of that algorithm. Now, in order to answer your question that why I am not doing this and why I am doing this merge sort, which is giving me this thing, this recurrence, I don't have to write that algorithm. I don't have to write this algorithm. In fact, I'm going to just solve this recurrence, and after solution we'll get an answer, and you'll see that we will again get n log n, but I'll talk about what is the difference. But I can just analyze the recurrence. I don't have to write the algorithm for it. So this is an importance of recurrences, that you can just analyze recurrences and talk about algorithms that you are not writing yet. Okay. Similarly, these two recurrences in front of you. The first recurrence says this is a recursive algorithm which divides itself into 4 problems of half size. This is also possible. Sometimes problems overlap and you can actually have 4 problems of half size. And this is the time it takes on that particular call, any call of size n, to do combine and whatever. Similarly, this is an algorithm which divides itself into 3 subproblems of half size each, and this is the time it takes to combine or whatever. Okay, so we should be able to analyze all these using the tree method, making the tree, computing work horizontally, and then adding it vertically. So I'm going to do that in the next classes. Thank you.